चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शाम शहर के नामपल्ली में वाक़ कुलहीन सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीधर बाबू व सदर नुमाइश सोसाइटी पूनम प्रभाकर के अलावा नुमाइश सोसाइटी के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब भी हैदराबाद का जिक्र होता है तो सबसे पहले चार मीनार, उसके बाद टैंक बंड और नामपल्ली नुमाइश को याद किया जाता है। इस नुमाइश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनतकार अपने स्टॉल्स कायम करते हैं और यहाँ कई दस्तकारी की अशिया नुमाइश में फ़रोख्त के लिए रखी जाती हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नुमाइश सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले तालीमी इदारों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना मदद दी जाएगी। India Industrial Exhibition. I request Shri D. Sridhar Babu Garu, President Exhibition Society, and Honorable Minister for Information Technology and Industry, Government of Telangana, Shri Ponnam Prabhakar Garu, and others to join, sir. Lighting the lamp has significance. We notice that the flame of a lamp is pointed upwards despite Mother Earth's attraction, indicating that the light of knowledge will take us to higher goals in life. A single lamp can light many other lamps while retaining its originality. So is the case with the spirit of exhibition, commonly known as Numaish. So let us all share the spirit of exhibition. Sir, may I now request D. Sridhar Babu Garu, President Exhibition Society, to give the welcome address, please. అందరికీ నమస్కారం. And Honorable Minister for Information Technology and గొప్ప ఆకాంక్షలతోటి ఏ విధంగా మొదటి అడుగు పడుతుందో అదే విధంగా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఈ నుమాయిష్ కార్యక్రమాన్ని కూడా జనవరి 1వ తారీఖు నాడు మొదలుపెట్టి దాదాపుగా 45 రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడమే